give it a try, but don't deep dive into this unless you are very sure about the same. Okay, so now let us try to understand classification using k-means. So this is the unsupervised learning, and यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है that I have this data of players. ठीक है, मेरे पास 90 प्लेयर्स का डेटा है आईपीएल का, एंड उन्होंने रन्स कितने मारे, एवरेज स्ट्राइक रेट, 4 सिक्सेस एंड हाफ सेंचुरीज. नाउ आई हैव टू क्लासिफाई देम इनटू कैटेगरीज, लाइक कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और ए बी, जितने भी कैटेगरीज हैं. एंड ए वाले मतलब बेस्ट बैट्समैन, बी वाले मतलब एवरेज, सी वाले बिलो एवरेज. राइट. सो यहाँ पर कोई लेबल नहीं है. इफ यू विल लुक एट दिस डेटा, यू विल सी यहाँ पर कोई लेबल नहीं है ना. यहाँ पर यस नो या कुछ एंड प्रिडिक्शन नहीं है, बस इनको कैटेगराइज करना है. तो वी कैन डू दैट. ये सब जो मैंने ग्राफ वगैरह बनाया, दिस इज पार्ट ऑफ ईडीए, एंड देन आई कैन क्रिएट क्लस्टर्स. ठीक है, एंड एट द एंड आई विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग. तो आई क्रिएटेड क्लस्टर 0 and 1 यूजिंग के मीन्स. ठीक है, के मीन्स एल्गोरिथम का यूज किया मैंने, एंड देन आई क्रिएटेड दिस 0 and 1 एज 0 एज ग्रेड ए एंड 1 एज ग्रेड बी. तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, सब में ग्रेड ऐड हो गया. सो गेल, गंभीर, सहवाग, जिनके अच्छे स्कोर हैं, दे आर गेटिंग ग्रेड ए. एंड दोज प्लेयर्स हु आर नॉट हैविंग वेरी गुड स्कोर, इफ यू विल सी ग्रेड बी वाले जो प्लेयर्स हैं, दे आर मोस्टली बॉलर्स. अजहर महमूद, एम के पांडे, बद्रीनाथ. ओके, बैट्समैन भी है, लेकिन इनका ग्रेड बी क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके रन्स कम है, स्ट्राइक रेट भी कम है, एवरेज कम है, दिस काइंड ऑफ थिंग. जडेजा इज देयर, संगकारा इज देयर, सो हैविंग बैड सीजन. इफ यू विल कंपेयर इट विद ग्रेड ए, सो यू विल सी कि इन सबके देखो 700, 300, 250 रन है, बट ग्रेड बी वालों के 100, 194. गांगुली के रन ज्यादा लेकिन एवरेज बहुत कम है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. सो ये मैंने इसको नहीं बोला कि कौन से ग्रेड बी में जाएंगे, कौन से ग्रेड ए में जाएंगे. मैंने सिर्फ डेटा दिया, एंड यूजिंग द डेटा माई एल्गोरिथम क्लासिफाइड बैट्समैन इनटू ग्रेड ए एंड ग्रेड बी. ठीक है, सो मोस्टली यू विल सी इट इज वर्किंग गुड. ग्रेड ए में सारे अच्छे प्लेयर हैं, ग्रेड बी में सारे एवरेज प्लेयर है. अच्छे प्लेयर भी, बट उनका सीजन अच्छा नहीं गया था, सो दैट इज व्हाई दे आर एवरेज फॉर द पर्टिकुलर सीजन. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या यूज हो सकता है, सुपरवाइज्ड में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का क्या यूसेज हो सकता है. नाउ लेट अस सी वन यस सर। लास्ट एग्जांपल ऑफ न्यूरल नेटवर्क, और इसमें भी हम लोग देखेंगे एनएलपी का यूज करके हाउ वी कैन क्रिएट सर्टन थिंग्स. ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है. इन एक्चुअल वर्ल्ड यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दिस इज माय एग्जांपल, और यहाँ पर क्या है कि मेरा एक मैसेज है जो मुझे एसएमएस आता है, एंड आई हैव टू प्रेडिक्ट इट एज स्पैम और हैम. ठीक है, हैम का मतलब है नॉट स्पैम, मतलब इट इज अ गुड थिंग. ठीक है, हैम बेसिकली मीन्स इट इज नॉट अ स्पैम मैसेज, एंड स्पैम इज अगेन व्हाट वी हैव टू फिल्टर आउट. सो आई हैव दिस डेटा एंड आई हैव दिस मैसेजेस. ठीक है, सो यू विल सी दैट you can never do nothing, this kind of thing. Mom say we have to go. These are actual messages, but free entry into 250 weekly competition is a spam, and please stop, this is inviting you for this is also a spam. So now I have to use this data. I have 4179 messages, and I know label data है ये भी. ठीक है, लेबल है वहां पे. 0 का मतलब है नॉट स्पैम, 1 का मतलब है स्पैम. ठीक है, एंड आई हैव टू प्रिडिक्ट 2 अदर मैसेजेस कि वो स्पैम है या नहीं. So first of all, I will do some things. So there is tokenization, there is a padding, there is conversion. So this whole thing is part of NLP, where I am converting first of all this text into tokens. Tokens मतलब number format में convert करता हूँ, फिर सबको same size में लेके आता हूँ. These kind of things are there that you have to do. Then what you see here is the neural network. ठीक है, ये जो पूरा कोड है, this is the neural network. There are different layers. See, डॉट लेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना. सो वी आर डिफाइनिंग द मॉडल कि इनपुट में कितनी लेयर होंगी, फिर उसके बाद बीच में कितनी कितनी लेयर होंगी, फिर आउटपुट में कितनी लेयर होंगी. तो वी हैव टू डिफाइन द मॉडल, देन वी हैव टू ट्रेन द मॉडल. ठीक है, यहाँ पर देखो, वी हैव टू ट्रेन, एंड एक्यूरेसी वगैरह हम देखते रहते हैं टाइम टू टाइम. आफ्टर वी हैव ट्रेन द मॉडल, इट कुड बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन. एंड प्रेडिक्शन यहाँ पर ऐसे होती है कि सी, यहाँ पर 1 का मतलब है स्पैम एंड 0 का मतलब है नॉट स्पैम, बट it's not black and white में, it does not work. My model will give me the value 0.876, or it can give the value 0.232. It can give this kind of values. So 0.876 में क्योंकि ज्यादा chances हैं spam होने के, I will post it into spam, and 0.2 I will post into not spam. So model will not give exact 1 or 0 values, it will give you the probability values, and then you have to
मेक अ डिसीजन. सो अगर आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप थ्रेशोल्ड को ऊपर रख लो कि 0.7 से भी नीचे होगा तो भी आई वांट टू गेट द सेम. एंड इफ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्पैम तो भी आप उसको चेंज कर सकते हो. नाउ सी हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पर क्या हुआ, हाउ आर यू डूइंग टुडे, अपने आप इट विल टेल दैट ओके दिस इज हैम एंड प्रोबेबिलिटी वाज 0.04. सेल टुडे, टू स्टॉप टेक्स्ट कॉल दिस इज ऑल्सो हैम. देन स्पैम में यहाँ पर दिस इज अ स्पैम, सो थर्ड वन, यू वॉन 100,000 कैश, कॉल टू क्लेम योर प्राइस. तो यहाँ पर बिकॉज इट इज 84% चांस ऑफ इट बीइंग स्पैम, तो मॉडल ने उसको स्पैम में डाल दिया. So this is how a simple neural network SMS text classifier will work. So I hope this is also clear to everyone. What is the usage here? Code वगैरह ignore करो, don't worry about the same. It will look very complicated if you don't know. Actually में इतना भी complicated नहीं है, but because you are not aware about it, so ये थोड़ा सा maths और अजीब सा लगता है देखने में because it is written like that, but it is not actually that complicated. But again, you should be aware about at least Python and you should know some basic mathematics. So I hope now that we have completed, you know what is machine learning, what are the usage and what are the types of machine learning, how it is different or same to AI, and how what is deep learning and what is NLP and usage क्या है इसका and इसके advantage disadvantage क्या हो सकते हैं. These kind of things you might face in interview questions. ठीक है. As a data analyst, as a business analyst, coding and prediction is not a part of your job role. Just have the basic idea and you are good to go. So before concluding with the session, any more questions? कुछ भी random question if you think you want to know about machine learning, if you want to know about AI, कोई भी चीज if you want to ask, you can ask. I would be very happy to explain. Like you might not able to get all the information, but I will try to keep it as simple as possible from my end. So anything you want to ask, anything you want to share? I have a question. Okay. Label data set means the data set with the column names, right? That is label data set. Label data set mean we know what the target is. So here if you will see, the label is heart disease. This is my label. I want to label the person. What we are doing, we are labeling the person. You are heart patient, you are not a heart patient. Right. Here we are labeling the person. Your salary is 35,000, your salary is 47,000. Right. Here we are labeling the SMS. Here we are labeling the SMS like this one is spam, this is not spam, this is spam. But in this data, there is also name, there is also column, there is also rows, but there is no label. These are players with their score and these things. Label is not there. We have to add the label that you are good player, you are bad player, you are average, you are good. But in the data itself, there is no label. So where there is no label or target variable or the variable that you have to predict, then it is a unlabeled data set. If there is a label, then it is a labeled data set. Okay, any other questions? Anything else? I get this recording session. Yes, you will definitely get the recording as well as I will share the PPT that I have shared on screen. Like with the recording also, I will upload the PPT there also. Okay. So go through the PPT, try to just learn the things theoretically and understand the application. That is all. Any other questions of data science, of machine learning, AI, machine learning engineer, if you think how it can be used in a particular industry or in a particular scenario? Because as a data analyst, as a business analyst, you can work in n number of industries. And same is the case with machine learning. You can use it in healthcare, in finance, in automobile, in sales, everything you can use data science into. Yes, Pankaj. सर सर जो हमको एक्चुअली में सिखाया जाएगा एज अ मशीन लर्निंग पाइथन, वो बेसिक होगा फॉर द डाटा एनालिस्ट रोल्स के लिए, या फिर अगर हम थोड़ा सा और एडवांस जाएं इसमें मशीन लर्निंग या पाइथन में, तो हम मतलब क्या कोई कोर्सेज या कोई बुक्स ऐसी हो जो आप रिकमेंड करना चाहें? देखो पाइथन, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न पाइथन एंड मैथ्स. ठीक है, वो करने के बाद तो यू कैन आस्क द टीम, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ डेटा साइंस इफ यू वांट. आई थिंक हम्म। अब उसके लिए फीस है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट डायरेक्टली यू कैन आस्क देम, तो आपको डेटा साइंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी.
If you want to attend live, then also, but you are into business analyst, right? नहीं सर, एक्चुअली बात ये है कि ये भी काफी ज्यादा यूज हो रहा है मशीन पाइथन लर्निंग, जो मैंने दो तीन वैसे जगह प्रेफरेंस अगर लगाया ना। आपको यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, तो यूट्यूब पर देयर हम्म, आर सम चैनल्स, स्टैटक्वेस्ट वगैरह, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग इज अबाउट। इफ यू थिंक यू वांट टू गो लार्जर, देन यू कैन आस्क द टीम दैट यू कैन गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेम। तो डेटा साइंस का आप रिकॉर्डिंग लेके उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। बट हम्म, इन केस यू वांट टू गेट द आइडिया कि मुझे रिकॉर्डिंग से पहले कि ये चीज कर सकता हूँ या इंटरेस्टिंग है इनफ, इफ यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग इनफ, देन यू कैन गो थ्रू यूट्यूब। एंड जो पाइथन कवर होगा ना, उसमें भी अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी कवर्ड। तो लाइब्रेरीज पाइथन की और क्या क्या बेसिक ईडीए वगैरह क्या होता है, वो काफी कुछ कवर होगा वहां पे। सो यू विल गेट आइडिया कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं आगे। तो जैसे कुछ उसमें असाइनमेंट्स या कैप्स्टोन प्रोजेक्ट वो इसमें है अपने पास पाइथन में? हाँ, पाइथन में भी है एंड डेटा साइंस में भी है। सो इफ यू वांट, यू कैन रिक्वेस्ट द टीम, दे विल शेयर द प्रोजेक्ट्स विद यू इन केस। अगर पाइथन की तो मिलेंगे ही, फॉर यू आर हम्म, एनरोल्ड इन पाइथन। बट इफ यू वांट सम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट और समथिंग, यू कैन आल्सो रिक्वेस्ट फॉर द सेम, यू विल गेट दैट। हम्म। हाँ सर, मैंने एक पूछा था ना कि सर कोई इसके रिगार्डिंग कोई आपको बुक पता हो अच्छी, जैसे कोई ना अपना बुक सेल्फ स्टडी करना चाहे आपको कुछ, तो या फिर खाली मैं वीडियोस देखूं बहुत है बुक जो बुक है। सो इंस्टीट्यूट से बुक मिले? इज वन ऑफ द गुड वन इज, I'll let you know the name. Just a second.